Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. So, bringing you another topic of asthma, how to do OET speaking. It's very simple. Again, first of all, the most important thing I always say, I know I repeat it, but still sometimes you people think that maybe you are taking an OET exam, but you forget in taking OET exam that you are a nurse. But always remember that you are a nurse. बस ये बात याद रखो, you are a nurse. और जो आपके सामने है एग्जामिनर, वो एग्जामिनर नहीं है, ही इज अ पेशेंट. बस ये दो बातें याद रखनी है. द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू इज पेशेंट, ही इज नॉट एन एग्जामिनर, ही इज जस्ट अ पेशेंट. दिस विल मेक योर लाइफ वेरी कंफर्टेबल एंड आपको बहुत 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 ईजी लगेगा. लेकिन अगर आप इसको हमेशा एग्जामिनर मानते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा. सो ऑलवेज behave as a nurse and take the examiner just as a patient. That's it. You will get 3 minutes to prepare the topic and 5 minutes you need to speak. So 3 minutes while preparing the topic, you can write anything. आप कुछ भी लिख सकते हैं. That is the best part. आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो अगर मेरे को ये रोल पे आएगा तो अगेन सबसे पहले मैं ये करूँगा. हॉस्पिटल वार्ड है. दिस पेशेंट वाज ब्रॉट टू इनटू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ योर हॉस्पिटल लेट लास्ट नाइट सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट एजमा अटैक. इसको हम अस्थमा बोलते हैं, वैसे आजमा होता है, एजमा अटैक. सो द पेशेंट वाज ब्रॉट इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. तो बेसिकली वी आर द नर्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. तो इसको समझो कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो. लास्ट नाइट सफरिंग फ्रॉम एन, ही इज करंटली बीइंग हेल्ड. अभी सॉरी, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया है. He is currently being held for observation. तो अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं है. अगर वहां पे है भी तो भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है. तो पेशेंट को बताना है आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए हो. पेशेंट हैज हैड अ फ्राइट, मतलब वो बहुत डरा हुआ है, एंड इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज कंडीशन, और वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है. तो दिस टास्क इज ऑफ कंसर्न्ड पेशेंट. तो कंसर्न्ड पेशेंट में आपको हमेशा नॉर्मल बिहेव करना है. दैट गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस. वो मैं आपको भी लिख के भी दिखा दूंगा. उसके अलावा क्या है, पहले आपको पूछना है हाउ द पेशेंट इज फीलिंग. तो सबसे पहली चीज है स्टार्ट. तो स्टार्ट हम यहाँ से कर लेते हैं. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस, जो भी आपका नाम है. आई एम अ नर्स हियर. बिल्कुल सिंपल. सभी द पर्संस हु आर फॉलोइंग अस न्यूली ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो अवर न्यू स्टूडेंट्स ऑफ डॉक्टर बीकेएम, प्लीज आराम से. एंड जितना आराम से मैं कर रहा हूँ, आई नो अब आपको जल्दी होगी कि रोल प्ले खत्म हो. ऐसे मत करो. 3 मिनट्स है आपके पास. इसको लिखो पूरा जैसे मैं आपके लिए लिखता हूँ डेली. यू शुड ऑल्सो राइट इट इन द एग्जाम एज वेल. आई एम अ नर्स हियर एंड आई एम अ नर्स हियर. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ आर यू फीलिंग नाउ. क्योंकि आपको पता है कि ये अस्थमा का केस है. सो आई एम अ नर्स हियर, आई वुड लाइक टू आस्क यू पोज हाउ आर यू फीलिंग नाउ. सबसे पहले ये लाइन तो लिख दो, क्योंकि इस लाइन को बोलने में गलती हो जाती है. क्योंकि फर्स्ट लाइन होती है हम एंग्शियस होते हैं व्हेन देयर इज अवर एग्जाम. सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिटन. इस लाइन को पूरा लिखना है सबने, जो भी हमें फॉलो करते हैं. उसके बाद फाइंड आउट हाउ द पेशेंट इज फीलिंग. ये तो इसी में कवर हो गया. वैसे भी हमारे रोल प्ले में भी दे रखा था. अगर ये नहीं भी दे रखो तो भी मैं ये क्वेश्चन पूछता. सो अब देखो, बिल्कुल इसके हिसाब से चलो. सो डू, क्वेश्चन हमेशा डू में बनाओ. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट अस्थमा. सेम बात जो दिया है वो सेम का सेम लिख दो. एक्सप्लेन व्हाट अस्थमा इज. तो आपको दे रखा है अस्थमा इज अ क्रोनिक डिजीज ऑफ एयरवेज. अस्थमा इज क्रोनिक डिजीज ऑफ एयरवेज. ये आपको दे ही रखा है, तो बाकी तो आप सेम ही बोलोगे. दैट मीन्स it is related to lungs and इस डिजीज में एंड इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में ब्रेथलेसनेस इज कॉमन. ये छोटी छोटी बातों में लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा, तो उतनी चीजें आप लिख सकते हो. डिस्कस द कॉजेस. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कॉजेस. तो इस लाइन को ऐसे बोलना है, तो इसको भी लिख देते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू.
या explain you about its causes. इसके causes क्या है? ठीक है, तो ये भी आप बता दोगे कि इसके causes ये हैं कि environmental भी हो सकती है और जेनेटिकली भी हो सकती है, इनहेरिटेड भी हो सकती है। तो अगर फैमिली में किसी को है तो उनके कारण भी हो सकती है और वो भी हो सकती है। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट। नाउ let me tell you, let me explain you about the treatment. बस फिर फर्स्ट ऑफ ऑल से शुरू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज द वेंटोलिन इनहेलर, ऐसे वैसे जो भी अच्छा बोलना चाहते हो आप। प्रोग्नोसिस ऑफ अस्थमा पेशेंट इज गुड, तो चाहे इट कैनॉट बी ट्रीटेड, ये ट्रीट तो नहीं हो सकता, बट यस इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो ये आपका रोल प्ले आपने लगभग तैयार कर लिया है। अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस रोल प्ले में। सो आपको ऐसे पहले ही प्रिपेयर कर लेना है रोल प्ले, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब मैं आपको बोल के दिखाऊंगा जैसा आपका एग्जाम होगा। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश एंड आई एम अ नर्स ओवर हियर, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वेल नर्स, आई एम नॉट फीलिंग टू गुड, आई एम फीलिंग रियली बैड. Could you please tell me why are you feeling bad? Because currently your condition is stable, so there is nothing to worry. So you should be happy that you are fine. And doctor has told us that your condition is completely stable and you are just being kept for the observation for 2 or 3 hours. After that, you will be discharged. Well, nurse, I know I would be discharged, but this problem is causing me a lot of trouble. When the asthma attack happened, I thought that I would die. Well, I do understand. Asthma attack is the one when you have problem of breathlessness. So obviously at that time, the condition is critical, but right now you are better. So could you please tell me, do you have any questions about asthma? Well, nurse, I have a lot of questions about asthma, to be honest. Like there are a lot of questions. Okay, so you can ask me your questions. Nurse, first of all, I would like to know what is asthma. See, asthma is a chronic condition of the airways. That means it is related to lungs, and in this condition, lungs do not function properly. So breathlessness is one of the major symptoms that happens during asthma attack. Well, nurse, that's the same thing happened with me. I know, but why does it happen? What are the causes? Okay, let me tell you that its causes can be environmental or it can be due to inherited predisposition, which means that environmental factors can be the reason of this problem. Like if I talk about air, dust, sometimes there are various allergens which can lead to asthma. So there is no particular reason that why asthma happens, but there can be various environmental factors like dust. Suppose if you are working in an industry where there is lot of pollution, so that can also be the reason. Apart from this, inherited predisposition is the second cause, that it can be due to the genes. That means in your family, if anybody has asthma, then you also have kind of genetic predisposition towards it. So that means in that case, it happens due to the genetics. But nurse, I don't know what to do now. How can I go about it? What's the treatment? Don't worry. Now I will explain you about the treatment. First of all, a Ventolin inhaler. That means it is a kind of a puffer that would be given by the doctor to you. Also, he will tell you how to prepare the doses and then how to use it. So basically, it goes directly into the lungs. There is a pump kind of a thing which is known as puffer. So if you press that pump, the whole of the medication goes into your lungs directly. So it immediately relieves your lungs, immediately relieve your symptom of breathlessness, and you start feeling better. So these are known as Ventolin inhalers, and these are really very important in cases of asthma. And the most important thing is that you need to keep this with you all the time. In the patients having asthma, it's very important to keep this Ventolin inhaler with you all the time. But nurse, I don't know, like I've got it that it happens without reasons. Basically, it can be environmental, genetics, and then using the medication. But what is the outcome? Can I be ever fine? Well, of course, see, asthma patients can be treated, especially the symptoms can be well controlled. So basically, the disease as such would be hard to treat,
as it may happen anytime, like during exertion, you might feel that you are having breathlessness. So in that case, you can use your inhaler. Also avoid any kind of vigorous activities. Like if you are playing any game which requires vigorous activities, you should avoid it for some time. And also the symptoms, as I have told you, this puffer can control the symptoms, and doctor will also give you various medications which will help. Further, I would like to tell you that you should do deep breathing exercises, which would be very fruitful in asthma. In cases of asthma, these exercises play a very important role. So have you understood everything? Well, yes, nurse, almost. Okay, nothing to worry. So you have understood everything. Also, I'm giving you a leaflet. So explain this last thing. This is very important. Also, I would like to give you a leaflet which contains all the information about asthma and its causes along with treatment plan. So please read this leaflet, and if there is any query, then you can ask me. Okay, nurse, thank you for giving me leaflet. That's great. So here is your leaflet. Now I am leaving, and I would like to reassure you that you will be fine if you will follow the doctor's instructions. Also, please keep the inhaler or puffer with you all the time. So these things will help you in treating this disease and also will make you comfortable. All right, nurse, thank you. Okay, then I'm leaving now. So here is your leaflet, and I reassure you, you will be fine. कोई बात नहीं, थोड़ा सा दोबारा बोल दिया, बट पेशेंट को रीअश्योरेंस होगी. सो पेशेंट को श्योर करना बहुत जरूरी है. एट लास्ट, OET speaking is all about satisfaction. So if you will satisfy the patient, everything will be fine. So this is how you execute the role play. Again, listen to this recording 2, 3, 4, 5 times so as to learn everything. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is +917696734256. If you have any query, you can always ask us. Thank you.